नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कृतिका और आपका अपना पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक नया शो, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होगी, बल्कि होगी उन खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट और होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहने वाली है हमारी निगाह, उस पर सबसे पहले कर लेते हैं रुख। 3 प्रमुख खबरें जिन पर रहेगी आज न्यूज पंच में बातचीत और आप तक पहुंचाएंगे पूरी पड़ताल इन 3 खबरों से जुड़ी हुई, जिसमें सबसे पहली खबर है कि आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। अब इसके बाद में शपथ ग्रहण तक क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलेगा, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, उस पर करेंगे बात। तो ये है प्रमुख खबर आज की, फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। साथ ही दूसरी खबर होगी कांग्रेस से जुड़ी हुई। जी हां, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रणनीति आज फेल हो चुकी है। क्या ये रणनीति, कैसे फेल हुई है ये रणनीति राहुल और प्रियंका की, उस पर करेंगे विस्तार से बात। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर की हम बात करें तो वो है इसरो का प्रोबा 3 मिशन। लेकिन ये प्रोबा 3 मिशन आखिर क्या है और इससे कैसे परचम लहराएगा इसरो आगे चल के और इसरो स्पेस जगत में, उस पर करेंगे विस्तार से बात। तो चलिए, ये है 3 प्रमुख खबरें और इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहले रुक कर लेते हैं पहली महत्वपूर्ण खबर का, महाराष्ट्र से जुड़ी। जी हां, इंतजार था लगातार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से 11 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने आज देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुन लिया है। और इसी बीच सीधा रुक कर लेते हैं सबकी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। Which has been under its occupation since 1948. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable, and mutually acceptable framework for boundary settlement. Honorable members would recall that the amassing of a large number of troops by China along the line of actual control, LAC, in eastern Ladakh in April-May 2020 resulted in face-offs with our forces at a number of points. The situation also led to a disruption of patrolling activities. It is to the credit of our armed forces that despite logistical challenges and the then prevailing COVID situation, they were able to counter-deploy rapidly and effectively. The House, sir, is well aware of the circumstances leading to the violent clashes in Galwan Valley in June 2020. In the months thereafter, we were addressing a situation that had seen not only fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the LAC. While a determined counter-deployment of adequate capability was the government's immediate response, there was also the imperative of a diplomatic effort to diffuse these heightened tensions and to restore peace and tranquility. Sir, the contemporary phase of our ties with China dates back to 1988, when there was a clear understanding that the Sino-Indian boundary question will be settled through peaceful and friendly consultations. In 1991, the two sides agreed to maintain peace and tranquility in the areas along the LAC, pending a final settlement of the boundary question. Thereafter, in 1993, an agreement was reached on the maintenance of peace and tranquility along the LAC. Subsequently, in 1996, India and China agreed on confidence-building measures in the military field. In 2003, we finalized a declaration on the principles of our relations and comprehensive cooperation, which included the appointment of special representatives. In 2005, a protocol was formulated on the modalities for implementations of CBMs in the military field along the LAC. At the same time,
the political parameters and guiding principles for the settlement of boundary question was also agreed upon. In 2012, a working mechanism for consultation and coordination called WMCC was established. A year later, we reached an understanding on border defense cooperation as well. Honorable Chairman, sir, the purpose of my recalling these agreements is to underline the elaborate nature of our shared efforts to ensure peace and tranquility in the border areas, and to emphasize the seriousness of what its unprecedented disruption in 2020 implied for our overall relationship. The situation arising after our counter-deployment called for a multiple set of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. In all of this, we were and we remain very clear that the three key principles must be observed under all circumstances. One, both sides should strictly respect and observe the LAC. Two, neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And three, agreements and understandings reached in the past must be fully abided by in their entirety. Sir, honorable members would also appreciate that as a result of the sustained tension and specific developments in the border areas, our overall relationship with China was bound to be impacted adversely. In the new circumstances, it was obviously not possible to continue the normal exchanges, interactions, and activities as in the past. In this regard, we made clear that the development of our ties were contingent on the principles of mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. So, throughout this period, honorable members would also be aware that the government has publicly maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stand on the situation, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, has been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility in the border areas would be the basis for the rest of the relationship moving forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on that objective. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself had many meetings with my Chinese counterpart, as indeed did my senior colleague, Raksha Mantriji. Our NSAs had also engaged his Chinese counterpart, because both of them are special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. It also had a military counterpart. It was called the Senior Highest Military Commanders Meeting Mechanism, SHMC. The interactions were naturally very tightly coordinated with the combined presence of both the diplomatic and military officials in all the negotiations. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of the SHMC have taken place. So, in that background, sir, I would like to inform the House today about the agreement reached on 21st October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers of the most recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship
with my counterpart, Foreign Minister Wang Yi, at Astana on 4 July and at Vientiane on 25 July. Our National Security Advisor and his Chinese counterpart also met in St. Petersburg on 12 September. The problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds, as well as to sites of significance to local people. As a result of this recent understanding, arrived at after intensive negotiations, resumption of patrolling through the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is now being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild bilateral relations. The special representatives were also to oversee the management of peace and tranquility in the border areas, besides exploring a fair, reasonable, and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18, 2024. Sir, Raksha Mantri ji also met Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Ministers meeting ADMM Plus in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation along the LAC, and the requirement to strengthen CBMs. They agreed on the importance of continued meetings and consultations at various levels. The House will remember that the October 21, 2004 agreement is the latest in a series of understandings regarding the resolution of the situation at various friction points in eastern Ladakh. In the aftermath of the events of May-June 2020 and the initial disengagement in Galwan Valley in July 2020, there was a foreign ministers meeting in Moscow in September 2020. At that time, our government's position was underlined that the immediate task was to ensure the comprehensive disengagement of troops in all the friction areas. It was also emphasized that the large concentration of troops along the LAC was not in accordance with the 1993 and 1996 agreements, and that the Indian side would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. We also expected that all agreements and protocols pertaining to the management of border areas would be scrupulously followed. Sir, the disengagement has now been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process, culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence in regard to the remaining issues that we had placed on the agenda. For the benefit of honorable members, I wish to flag for your attention the previous positions articulated in Parliament previously by the government on this issue. On 15 September 2020, Raksha Mantri ji had made a detailed statement on Chinese attempts to transgress the LAC and the appropriate response given by our armed forces. On 11 February 2021, Raksha Mantri ji again briefed the House about the agreement on disengagement in the north and south banks of Pangong Lake. Thereafter, in August 2021, a third phase of disengagement took place in the area of Gogra, whereby troops would henceforth be in their respective bases. The next step took place in September 2022, which pertained to the Hot Springs area. Again, forward deployments ceased in a phased, coordinated and verified manner, resulting in the return of troops to their respective areas. The most recent October 21, 2024 agreement comes in the wake of earlier disengagements. It completes the first phase that was agreed to in Moscow in September 2020. As members are aware, there is a long history of frictions, transgressions, and face-offs
in several sectors of the India-China border. This goes back to Barahoti from 1954, to Longju in 1959, to Sumdurongchu from 1986 to 95, and Depsang in 2013, amongst others. In the past, earlier governments have agreed to a range of steps to diffuse situations that have arisen at different times, including offers from our side to create demilitarized zones, limited non-patrolling zones, relocation or withdrawal of posts, disengagement of troops, and dismantlement of structures. Different locations have seen different solutions being examined. Where the October 21 understanding is concerned, our objective has been to ensure patrolling as in the past to the relevant patrolling points, as well as the resumption of grazing by our civilians as per long-standing practice. This is indeed what we have agreed upon in regard to Depsang and Depchok. In a few other places where friction occurred in 2020, steps of a temporary and limited nature were worked out based on local conditions to obviate the possibility of further friction. This, I must stress, applies to both sides and can be revisited as the situation demands. In that sense, our stance has been resolute and firm and serves our national security fully. The ensuring of our national security in this manner is the result of cumulative and coordinated endeavors of many parts of the government, obviously centered around defense and security forces. Indeed, the competence and professionalism of our services in this period was displayed in our speedy and effective counter-deployment. In the negotiations with China, the defense and diplomatic arms worked in lockstep to ensure that our national interests were comprehensively served. In that context, the House would also recognize that there has been a significant improvement in the border infrastructure, which has made such effective counter-deployment possible. This is reflected, amongst others, in the increase of border infrastructure allocations in the last decade. The Border Roads Organization alone has incurred 3 times the expenditure level of what it was a decade ago. Whether it is the length of the road network or of bridges or the number of tunnels, there has been a substantial increase over the earlier period. Notable milestones in this regard include the Atal Tunnel to Lahul Spiti, the Sela and Nechifu Tunnel to Tawang, the Umlingla Pass Road in southern Ladakh, and the extended opening of the Zojila axis. Work is progressing on some strategically important roads and airfields in Ladakh. The adoption of new technologies in high altitude, remote, inaccessible, and permafrost areas has also been significant. All of this, sir, reflects the government's firm commitment to protecting our borders and ensuring that the armed forces get the facilities and the logistical support that they deserve. Finally, let me share, sir, with honorable members our expectation regarding the direction of ties with China in the near future. Our relationship has progressed in many domains, but was obviously negatively affected by recent events. We are clear that the maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for the development of our ties. In the coming days, we will be discussing both de-escalation as well as effective management of our activities in the border areas. The conclusion of the disengagement phase now allows us to consider other aspects of our bilateral engagement in a calibrated manner, keeping our national security interest first and foremost. In my recent meeting with Foreign Minister Wang Yi, we reached an understanding that the special representatives and the Foreign Secretary level mechanisms will be convening soon. So, sir, let me conclude by thanking honorable members for their attention, and I'm confident that the government has their full support in addressing the complexities of this important relationship. Siri, Piyush Goyal to
तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त राज्यसभा में अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने खासतौर पर बोला कि भारत और चीन के जो संबंध हैं वो खासतौर पर LAC पे अब कहीं ना कहीं लगातार सुधार हो रहा है, और ये सुधार हो रहा है भारत की कूटनीतिक पहल की वजह से। भारत चीन संबंधों में हाल ही में जो प्रगति हुई है उसको लेकर राज्यसभा में बयान देते हुए नजर आए डॉक्टर एस जयशंकर। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि LAC पर जो स्थिति है वो इस वक्त सामान्य है, साथ ही सेना के प्रयासों से स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। तो ये बातें एस जयशंकर की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि जो पहले के हालात थे और जो आज के हालात हैं उनमें लगातार सुधार हो रहा है, और संबंध तो बनने ही चाहिए, लेकिन संबंध के साथ साथ शांति बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ये बात डॉक्टर एस जयशंकर राज्यसभा में कहते हुए नजर आए अपने बयान के दौरान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कूटनीतिक पहल से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जो भारत की तरफ से कूटनीतिक पहल की गई है उससे जो स्थितियां हैं, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार हुआ, और शांति के लिए साझा प्रयास जो हैं भारत और चीन दोनों ही देशों की तरफ से लगातार जारी है। बॉर्डर पर लगातार शांति की अपील भी की जा रही है, और इस पूरी जो स्थितियां में सुधार हुआ है उसमें सबसे अहम योगदान है हमारी सेना का। तो भारत चीन संबंधों में हाल ही में जो लगातार प्रगति हुई है, जो रिश्तों में सुधार आया है LAC को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर अपना बयान देते हुए नजर आए थे डॉक्टर एस जयशंकर राज्यसभा में आज। और इससे पहले यही तमाम बातें उन्होंने लोकसभा में भी कही थी, और वहां भी बीते कल उन्होंने यही कहा था कि चीन और भारत के संबंध लगातार अब सुधर रहे हैं। तो ये थी प्रमुख बातें, और इसके साथ ही अब वापस रुक कर लेते हैं अपने इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम अब बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में, और चलिए आगे बढ़ते हुए न्यूज पंच में अब बात करते हैं संभल हिंसा को लेकर, क्योंकि संभल हिंसा के बाद सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि राजनीतिक दल लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। आज संभल प्रशासन के लगातार मना करने के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना हो गए सुबह, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया, जहां करीब 1.5 घंटे तक उन्हें रोका गया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब इन सब चीजों के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि जितनी देर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बॉर्डर पर अपनी जिद को लेकर के डटे रहे हैं, उतनी देर में बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आम जनता कई घंटे तक इस जाम में फंसी रही है। राहुल गांधी जो खुद को जनता का नेता कहते हैं, आज उन्हीं के कारण जनता घंटों जाम में फंसी रही, परेशान हुई। क्यों, इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति किस तरीके से आज फेल होती हुई नजर आई है, वो इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए। सबसे पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी जब प्रशासन की बात मानने के बाद में वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि जब 1.5 घंटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर रहे थे, तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस जगह पहुंचे, बॉर्डर पर पहुंचे, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, और क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करी हुई थी ताकि वो उससे आगे ना बढ़ पाए, जिसकी वजह से उनके पीछे एक लंबा जाम लग गया। तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जब काफी जाम लगने के बाद में जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो परेशान रही। राहुल गांधी एक तरफ तो खुद को पब्लिक का नेता कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पब्लिक को परेशान भी करते हैं। तो संभल को लेकर के किस तरीके की रणनीति कांग्रेस ने बनाई, लेकिन उनकी रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती हुई आज नजर आई है, और कैसे ये रणनीति फेल हुई है इन 3 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया। इसके साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं इसरो को लेकर। जी हां, आज इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इसका नाम है प्रोबा 3 मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के इस समर्पित वाणिज्यिक मिशन के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान आज शाम 4:08 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये लॉन्चिंग होगी, लेकिन वो नजारा बेहद अद्भुत होगा जब वाकई 4:08 पर इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये मिशन क्या है और क्यों इसे भारत के अंतरिक्ष मिशन की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
जो भारत के अंतरिक्ष मिशन की हम बड़ी सफलता के तौर पर जिसे देख रहे हैं। स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं और भारत की जो इसरो है उसकी तरफ से एक बड़ी सफलता इसे देखा जा रहा है। 2 साल तक ये मिशन चलेगा। 2 साल का ये मिशन है, जो एक समय सीमा रखी गई है इस मिशन को लेकर। 4 बजे का हालांकि हम सभी को इंतजार है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें एक साथ 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सैटेलाइट का सटीक ढंग से अपनी जगह पर पहुंचना बेहद अहम है। तो आज एक नया इतिहास इसरो जो है रचने जा रहा है और सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हैं आज इस तस्वीरों पर। प्रोबा 3 यान में डबल सैटेलाइट है। प्रोबा 3 मिशन आखिर क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। 2 अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। दरअसल एक सूर्य मिशन भी लगातार चल रहा है इसरो का और उसमें कहीं ना कहीं इसकी अहम भूमिका होगी। एक यान की तरह उड़ान भरेंगे ये दोनों ही यान और दोनों सैटेलाइट सूरज के कोरोना की स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी की जाएगी जिस तरीके से हम सूर्य मिशन के L1 की लगातार हम बात करते हैं आदित्य L1 की, उसमें कहीं ना कहीं ये काफ़ी मददगार साबित होगा और साथ ही पता चलेगा कि क्या है सूरज का डायनेमिक्स और इसका धरती पर क्या असर होता है, कैसे असर होता है। ये तमाम चीज़ें इस मिशन के जरिए हम जान सकते हैं। तो सीधे तौर पर हम देखें तो ये तमाम बातें हैं प्रोबा 3 को लेकर के। तो 2 प्रोबा मिशन आज लॉन्च इससे पहले हो चुके हैं और अब आज एक और लॉन्च होने जा रहा है। तो इस पर निगाहें लगातार बनी हुई है और समय रहेगा 4:08 का, जिसकी लाइव तस्वीरें भी हम आप तक उस दौरान पहुंचाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा। 4:08 पर बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये आने वाली हैं और इसरो एक बार फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहा है। एक बार फिर स्पेस सेंटर में हम देखें तो स्पेस जगत में एक और पहचान भारत बनाने जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में आज के लिए मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर सुबह 10:30 बजे होगी आप सभी से मुलाकात। नमस्कार।